Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Vinay and I'm here with the official launch video for Target JEE 2028 11th plus 12th full batch 1. So for those of you who do not know, I'm on my website vinayopal.com and you can explore the website on your own. यहाँ पे testimonials है, मेरे qualifications वगैरह है. You can check it out on your own. And let me just come to the courses. So I'm going to talk about the JEE 2028 11th plus 12th full batch 1. तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं from coming Monday. This batch will start coming Monday. And let me just talk about this batch. So if you want, you can go to vinayopal.com and you can just go to courses and you can just click on view course. यहाँ पे जो view course है, you can click on that and you'll be taken to the course page. Alright. तो यहाँ पे let me just click here. तो ऐसा कोर्स पेज दिखेगा तुमको एंड राइट हैंड साइड पे दिखेगा स्टार्ट अ फ्री ट्रायल. तो वो वही क्लिक कर लेना पहले. So you will be able to watch the free lectures as well. Okay. So if you just click on start a free trial, then you'll be taken to the course page. Alright, so यहाँ पे एक वेलकम मैसेज है, वो पढ़ लेना अच्छे से. And the first chapter that we're going to start off with is calculus. And कैलकुलस के फर्स्ट लेक्चर है वो फ्री है फॉर ट्रायल, सो यू कैन वॉच दैट इमीडिएटली आफ्टर एनरोलिंग फॉर अ फ्री ट्रायल. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस कोर्स. किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगा, किस तरीके से फ्लो होगा, कब सिलेबस ख़त्म होगा वगैरह, कैसे डाउट्स क्लियर होंगे, तो सब पूरा डिटेल में बात करता हूँ मैं. सो दिस कोर्स इज़ फॉर JEE 2028 एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीट ज़ीरो and go to JEE advanced level. तो ये जो कोर्स है उसमें I assume that you are at complete zero. I do not assume you have any knowledge of any JEE physics or even JEE mathematics. ज़्यादा नहीं ज़रूरत है in this course. The only prerequisite is कि तुमको तुम्हारा 10th standard mathematics हो जाना चाहिए. Okay. There may be some of you who are 2029 aspirants and some of you may be even 2030 aspirants watching this video. So if you want, you can still enroll in this batch, provided you have a decent grasp of 10th standard mathematics, basic trigonometry and basic quadratic equations. But बस उतना ही ज़रूरत है. Okay. Alright. So we are going to start off from complete zero level and we are going to go in depth to JEE advanced level. This course will take you to your full potential as far as JEE Advanced is concerned. And उसमें JEE Mains automatic cover हो ही जाएगा. JEE Mains का जो level है वो काफ़ी कम है compared to JEE Advanced. तो students who prepare for JEE Advanced automatically find JEE Mains easy. One thing that a lot of students and a lot of parents do not realize is that जो लोग, even if a student is aiming for a good percentile in JEE Mains as his or her first priority कि JEE Mains मुझे क्रैक करना है, उसके लिए भी you should always study at a higher level than JEE Mains. That means JEE Advanced would be best. Studying for JEE Advanced would be best because जो लोग JEE Mains में बहुत अच्छा करते हैं, 99 percentile plus वगैरह लेकर आते हैं, they are the ones who have been actually studying for JEE Advanced, क्योंकि उनके लिए उनको JEE Mains के questions easy लगते हैं. Okay, so लेट मी टॉक अबाउट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कोर्स. तो यहाँ पे जैसे कैलकुलस चैप्टर है, लेट मी जस्ट गो टू द 2027 बैच, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है. यहाँ पर द मॉड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन मंडे March 16th. लेक्चर 1 तो मैंने अपलोड कर दिया एज अ फ्री ट्रायल. देन लेक्चर 2 विल बी अपलोडेड March 18th. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा लेक्चर्स अपलोड होंगे. ठीक है. सो लेट मी जस्ट गो टू द 2027 बैच, वहाँ पे अपलोडेड है. तो जैसे कैलकुलस में, so in every chapter I will upload my module at the top of the chapter, the calculus, and सारे exercises के solutions हैं. तो यहाँ पे जो module है exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4, उसके सारे के solutions भी यहाँ पे available है. Okay, तो exercise 1 मैंने पूरे solutions बना के डालूँगा मैं. Alright, then you will have lecture 1 and generally I split the lecture in 2 or 3 parts just for ease of viewing for the student, तो student को भी अच्छे से समझ में आ जाता है. And the total length of the entire lecture will mostly on an average be around 1 hour. हो सकता है कभी थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो. Okay. अच्छा,
एंड देन ऐसे कर करके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लेक्चर्स अपलोड होंगे. आफ्टर एवरी लेक्चर देयर विल बी अ होमवर्क गिवन टू यू, and that this homework will be given to you from my module. It will be, if I look at further chapters, so if I just look at Newton's laws, so the homework will be given to you from module. Homework will also be given to you from a book called SBT. Shashi Bhushan Tiwari author का नाम है, and he has written a very good book on problems. I'm talking about the book that he has written on purely problems. तो वो प्रॉब्लम्स वाले बुक से भी मैं होमवर्क दूंगा, विच आर वेरी गुड JEE एडवांस लेवल क्वेश्चंस, एंड उनके भी सॉल्यूशंस में बनाऊंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू लॉट ऑफ यूनिक मेथड्स, लॉट ऑफ यूनिक शॉर्टकट्स, and we are going to use those shortcuts and methods and techniques in order to solve the homework right from the beginning. तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं who discover my channel very late in their JEE preparation, and so they learn my short methods, unique methods, techniques, very elegant techniques which I teach, which a lot of techniques that I have come up with myself. They learn that very late in their JEE preparation after they discover my channel, after they enroll in my course. But here in this batch, I'm going to teach you all those methods right at the beginning itself, so that you are able to practice it again and again. जब तुम homework solve कर रहे हो तभी ये सब techniques practice करो, and जब तुम exam में एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम नेचुरली टू यू. ओके, सो ये जो शशि भूषण तिवारी बुक है उसमें सॉल्यूशंस भी है, बट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माय ओन सॉल्यूशंस इन दिस फुल कोर्स यूजिंग माय शॉर्ट मेथड्स, एंड यू विल क्लियरली सी कि कितना फास्ट हम सॉल्व कर पाते हैं. टाइम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आजकल JEE एडवांस में स्पेशली, एंड बहुत सारे ऐसे JEE एडवांस क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे यूनिक मेथड से काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स. ओके, सो आई हैव दिस लेक्चर विल बी अपलोड. सो मैं कैलकुलस की बात कर रहा था. सो होमवर्क विल बी गिवन फ्रॉम बुक्स SBT, एंड एक इरोडोव करके बुक है, एंड माई मॉड्यूल. सो ये तीन मेजरली ये तीन रिसोर्सेज होंगे. नाउ लेट मी जस्ट गो बैक टू कैलकुलस. सो ऐसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे you will watch the lecture and you will solve the homework, and like I said हर homework का मतलब पूरा वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है at the top of the chapter. ठीक है, और जैसे होमवर्क आफ्टर लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 के बाद ये एक्सरसाइज मॉड्यूल से मैंने दिया है कैलकुलस में, तो ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है. कुछ नहीं आया तो सोल्यूशन देखो, नहीं आया उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट पूछो. अभी डाउट कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ, आई विल कम टू दैट. But first, let me just talk about, this is the way you watch the lecture, solve the homework, ask your doubts. You can ask doubts in anything. You can ask doubts in the lecture itself as well. I'll talk about that later. And at the end of the chapter, there will be a test. Okay. So this test, you can give the test. Generally 1 hour test होता है. हर chapter के बाद एक test होगा to assess कि कैसा तुम्हारा preparation है, status है. उस test के भी पूरे video solutions में बना के डालूंगा. Alright, and ऐसे करते करते we are going to go to the next chapter and the next chapter for kinematics, for Newton's laws. The whole key to the entire process of cracking JEE Advanced is consistency. If you are consistently watching my lectures, if you are consistently asking your doubts and understanding all the concepts and solving homework and finally giving the tests, I guarantee that you will reach your full potential after you complete my course. Okay. Now let me come to doubt solving. So doubt solving कैसा होता है? There is a beautiful system on my platform to ask doubts, to get your doubts cleared. 100% doubt clearance by me. This may sound a little unbelievable because ऐसा बहुत ही rarely होता है. स्टूडेंट का हर डाउट क्लियर हो जाता है अच्छे से. But if you have any seniors who have enrolled in my courses, they will confirm to you that I clear 100% doubts and completely. And I don't stop till the student is satisfied. Okay, so for example, let me just go to a random lecture. Let's see इसमें किसी ने डाउट पूछा है क्या. हाँ, तो जैसे कि किसी ने डाउट पूछा है, तो the way that doubt system works is तुम वीडियो देख रहे हो, you can just pause the video at any instant जहाँ पे तुमको डाउट आया है, and you can just type in a doubt here.
ओके, एंड देन पोस्ट डिस्कशन करोगे तो वो ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प के साथ आ जाएगा, तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में तुमने डाउट पूछा है। तो जैसे किस आदित्य ने पूछा है 9:34 इन लेक्चर 5 पार्ट 2, तो यहाँ पे कुछ तो पूछा है, मैंने कंफर्म किया है, ठीक है। एंड देन किसी और ने भी कुछ पूछा था, मैंने एक्सप्लेन किया, फिर ये ओके। सो इट्स अ नाइस बैक एंड फोर्थ कन्वर्जेशन, एंड I won't stop until you understood. You can keep asking me the doubt in the same thread. मतलब हर एक doubt के साथ एक thread create हो जाता है. Other students can also reply, but mainly it's a conversation between you and me. Okay, and I clear doubts very frequently. तो ultimately सारे doubts clear करता हूँ. And I've cleared I think more than 10,000 doubts ever since I started my courses on this platform. So 100% doubt clearance is guaranteed from my side. And अगर तुमको ये बिलीव नहीं होता है, विच आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ऐसा बहुत रेयर है कि दूसरे स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में डाउट क्लियरेंस इतना कंप्लीट तरीके से होता है, स्पेशली बाय द टीचर हु इज़ टीचिंग, तो ये बहुत रेयर है. आई थिंक आई एक्चुअली डोंट नो anywhere else where this happens, but if you do not believe me, then you can just ask your seniors who have enrolled in my courses and they'll confirm this to you. Alright, so ये रहा मेरा doubt clearance. Now syllabus completion कैसे होगा, कब होगा? Syllabus will get completed in July August 2027. So July August, probably July and August, early August 2027 में syllabus complete हो जाएगा. And syllabus completion के बाद you will get enrolled in the crash course, which is included in this course for free. So crash course is a very popular course. Over the last few years, many students have used my crash course successfully to crack JEE Advanced. So that crash course is included for free. तो उसमें भी बहुत सारे homework problems है, उसमें भी full video solutions वगैरह मैं बना के दूंगा, उसमें भी तुम doubts पूछ सकते हो. You can ask doubts anytime in any lecture. इस course में भी you can ask doubts in an old lecture anytime. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब हो सकता है कि 2 महीने बाद तुम काइनेमेटिक्स रिवाइज कर रहे हो, पहला वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, ऑफ कोर्स हो सकता है, एंड आई एनकरेज यू टू आस्क डाउट्स. ओके, सो एट द एंड, लाइक आई सेड, एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर देयर विल बी अ टेस्ट, ठीक है, एंड ऐसे करते करते हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर क्रैश कोर्स. एंड इसमें मैंने गेम चेंजर कोर्सेज भी, गेम चेंजर शॉर्टकट कोर्स, गेम चेंजर वाज द फर्स्ट कोर्स आई लॉन्च्ड ऑन माय वेबसाइट. इट्स अ कोर्स अबाउट वेरी यूनिक मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स दैट मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, बट उससे JEE एडवांस प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है. सो दैट कोर्स इज इंक्लूडेड फॉर फ्री, एंड इनफैक्ट आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हेन टू वॉच विच चैप्टर, विच वीडियो व्हेन टू वॉच, वो मैं बोलूँगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट गो हियर. जैसे न्यूटन्स लॉज के लेक्चर 4 के बाद मैं बोलता हूँ रिक्वायर्ड वॉचिंग, और द गेम चेंजर लेक्चर, न्यूटन्स लॉज, ऐसे, ठीक है. मतलब आई टेल यू व्हेन टू वॉच विच गेम चेंजर वीडियो, तो वहीं पे तुम सीख जाओ, स्टार्टिंग में तुम सीख जाओगे द यूनिक मेथड्स, शॉर्ट मेथड्स. ऑलराइट, एंड ऐसे करते करते वील फिनिश आवर सिलेबस बाय August 2027, and then we'll have the crash course. So ultimately you will reach your full potential as long as you are consistent. Consistency is the only thing I ask from you. And कितने hours लगेंगे per week? ज़्यादा नहीं लगेंगे actually, because my lectures are very time efficient. 1 hour on an average lecture का है, but उसको देखने में एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करने में, लेक्चर पॉज करके सॉल्व करने में, शायद तुमको 1 आवर का 2 आवर्स लग जाएगा. दैट्स द नॉर्मल इन माई एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टूडेंट्स कि 1 आवर लेक्चर विल टेक यू 2 आवर्स टू कम्प्लीटली वॉच इट प्रॉपरली. ओके, एंड देन you solve the homework, which will probably take around 1.5 hours. So around 3.5 hours, मान लो चलो 4 घंटा. So हर लेक्चर का 4 घंटा, मतलब हफ्ते में 3 बार लेक्चर होने वाला है, and that would mean 12 hours. So I need 12 hours of yours every week. So that should not be too difficult. In fact, that should be very easy if you're preparing for JEE Advanced. Okay, 12 hours per week करके अगर तुम consistently पढ़ोगे, doubts पूछोगे, then there is full guarantee that you'll reach your full potential. So I will see you in my courses, and I will see you at the top.